Hi everyone, so welcome to Sleepy Classes. So this lecture is on JUGAAD series and this will have a keyword for social issues. So let's start. So basically the keyword is he soul, and where H stands for health, E stands for economic, S for social, O for occupational, leisure, and E for environmental, right? So whenever you have questions on, let's say, problems of old age, you can apply this keyword. We'll see how. Then gender के ऊपर है, या children, rural, urban, या the problems of urban cities, right? And lastly, on caste, etc. Then you can have problems of people living with HIV, mental patients, etc. So lots and lots of ways in which this keyword can be applied. So let's see how. Firstly, you have health. So old age में क्या है हमारे पास? We have problems of, like, we do not have old age के लिए geriatric care available in every hospital, especially the primary health centers, right? So there is this problem of AAA, that is, they do not have availability, accessibility and affordability of geriatric care. Or you can also put it in a way that the geriatric care, the whole facility, it lacks the funds, functions and the functionaries. Okay, so these are also the problems associated with the health of old age. Then when we talk about maternal and child, you know that we have rate incidences of high high IMR, infant mortality rate, and high MMR. So these problems are there, right? Mental, we have come up with mental health act. Okay, so you can actually see the problems which arise. Then people living with HIV status, Swachh Bharat, how that is related to the health in rural areas, in urban areas, in cities. Okay, and then you have MDGs, SDGs also had health as a goal, right? देन वी हैव इकोनॉमिक. ओल्ड एज में इकोनॉमिक क्या प्रॉब्लम है कि बेसिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ बीन ऑन द राइज, ठीक है, बट एट द सेम टाइम देर इज़ डिक्रीज्ड परचेसिंग पावर, एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम विच इज़ एविडेंट विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड एज. ठीक है, सो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर देम. जेंडर में क्या है? वी हैव अ ग्लास सीलिंग. ठीक है, पिंक कॉलराइजेशन. पिंक कॉलराइजेशन इज कि जो वुमेन है दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू जॉब्स लाइक टीचर्स, रिसेप्शनिस्ट, नर्सेस, एट्सेट्रा. डिफरेंशियल wages, सेम काम के लिए वुमेन आर गिवन लेस वेजेस. लोअर क्लास बट अपर कास्ट. ठीक है, अब क्या है, प्रॉब्लम ये भी है कि अपर कास्ट के हैं बट बिकॉज लेट्स से ब्राह्मण्स, ठीक है, दे डू नॉट हैव रिजर्वेशन जाट्स, जैसे कि अभी आपने देखा कि इट लीड्स टू मोबिलाइजेशन फॉर रिजर्वेशन स्पेशली इन जाट्स इन हरियाणा. सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम दैट अराइजेज. देन व्हेन वी टॉक अबाउट रूरल एरियाज, वी सी दैट देयर आर लेसर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, सो इट लीड्स टू माइग्रेशन, राइट? एंड देन व्हाट आर द सोशल प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड एज? ओल्ड एज में क्या है? Since they are disconnected from their social network, especially after retirement, it creates a lot of loneliness, psychological problems. Then what happens is that they have this tendency to interfere in the household chores, which is not appreciated in present day individualistic urban areas and amongst the youth. So that creates a lot of problems between the old age and the youth. Then there is also increased crime because they are more vulnerable, they are easier to overpower. Okay, and increased nuclearization of families has also led to this phenomenon of old age homes. When we talk about gender, जेंडर में क्या है? सोशल इश्यूज उनके स्टार्ट हो जाते हैं राइट इवन व्हेन दे आर बॉर्न. ठीक है, फीटिसाइड है. देन व्हेन दे आर बॉर्न, तो क्या है, उनको खाना कम दिया जाता है, लेस न्यूट्रिशियस फूड, क्योंकि वो मेल चाइल्ड इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड फॉर दैट. एजुकेशन स्किल्स के लिए उनको कम प्रेफरेंस दी जाती है. दे आर मोस्टली कन्फाइंड टू डोमेस्टिक चोर्स. देयर इज लोअर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एट्सेट्रा. सो दीज आर द सोशल प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू जेंडर. देन कास्ट में क्या है? स्क्रिप्टिव जॉब्स है, स्टिग्मा है. इवन इफ दे गेट जॉब्स, लेट्स से रिजर्वेशन के थ्रू उनको जॉब्स मिलती है, सो देयर इज ऑलवेज द स्टिग्मा अटैच. ठीक है, इवन इफ दे आर एट हायर पोस्ट, तो उनको हमेशा दे आर लुक्ड डाउन अपॉन, मोस्टली इंडल्जिंग इन मीनियल जॉब्स. ठीक है, जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग एट्सेट्रा. रूरल एरियाज़ में क्या है? रूरल एरियाज़ में सोशल, religion, caste, land relations, kham panchayat, patriarchy, these are 4-5 issues that define rural areas में social issues. जैसे religion है तो interfaith marriages are not appreciated. ठीक है, land relations बहुत strong है, patriarchy बहुत strong है rural areas में. तो आप इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिख सकते हैं खुद से.
देन यू हैव ऑक्यूपेशनल, ओल्ड एज में क्या है, पोस्ट रिटायरमेंट सिंस देर इज इंक्रीज टाइम सो देर आर साइकोलॉजिकल इशूज, ठीक है, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन स्ट्रेस बिकॉज नो और लेस इनकम. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जेंडर देर इज इशूज लाइक हरासमेंट एट वर्क प्लेस, क्रैचेस नहीं होते हैं, ठीक है, कम्यूटिंग इज़ अ प्रॉब्लम, सेफ्टी इज़ अ प्रॉब्लम, नाइट शिफ्ट्स वुमेन दे आर नॉट गिवन नाइट शिफ्ट्स फॉर अ लॉट ऑफ रीजन्स, राइट. एंड कास्ट में जब हम बात करते हैं अगेन अस्क्रिप्टिव है, स्टेटस अटैच्ड है, लोअर कास्ट क्लास नेटवर्क, ठीक है. तो लोअर कास्ट क्लास नेटवर्क में क्या है कि जो लोअर कास्ट से हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव एक्सेस टू गुड एजुकेशन, है ना, तो क्या होता है कि उनकी क्लास भी लोअर ही रह जाती है. सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम दे हैव. व्हेन वी टॉक अबाउट रूरल एरियाज वी हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, चाइल्ड लेबर, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा, राइट. देन वी टॉक अबाउट द लेजर. लेजर में क्या है, ओल्ड एज में क्या है, पब्लिक स्पेसेस आर श्रिंकिंग, ठीक है, जैसे कि पार्क्स इन अर्बन एरियाज बहुत ही कम रह गए हैं. सो उनके पास लेजर की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है. फैमिली टाइम में क्या होता है कि जो उनके बच्चे हैं दे आर वर्किंग ऑल डे ऑल नाइट, सो दे डोंट गेट टू इंटरेक्ट विद देम, वो अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं. जेंडर की बात करें तो सोशल कंट्रोल बहुत है वुमेन के ऊपर, ठीक है, द टाइप ऑफ गेम्स दे प्ले, ठीक है, उसी से जेंडर रोल्स डिसाइड हो जाते हैं. सेफ्टी है ना, सो उनकी लेजर एक्टिविटीज़ आर रिस्ट्रिक्टेड इन द नेम ऑफ वुमेन सेफ्टी. देन द काइंड ऑफ लेजर परमिटेड लाइक स्मोकिंग इफ डन इन स्पेसेस, पब्लिक स्पेसेस और प्राइवेट स्पेसेस बाय मेन, ठीक है, दैट माइट बी अप्रिशिएटेड, और वही चीज़ अगर वुमेन करे सो शी इज़ लुक डाउन अपॉन, राइट. देन कास्ट में क्या है, लोअर कास्ट या सोशली ऑस्ट्रोसाइज, ठीक है, गेटोइजेशन दैट इज़ अ फिनोमिनन. एंड उसके बाद लास्टली वी हैव इन्वायरमेंटल में अगर ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स देखें तो हमारे पास है सिंस देयर इज़ पुअर एयर वाटर क्वालिटी इन अर्बन एरिया सो दे आर हाईली वनरेबल टू प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद देम. देन देयर इज़ ऑल्सो फिनोमेना ऑफ इंटीरियर एयर पोल्यूशन. देन जेंडर में क्या है, इको फेमिनाइजेशन, जैसे अगर हम चिपको मूवमेंट की बात करें, ठीक है, तो इट वाज नॉट एन इकोलॉजिकल मूवमेंट, इट वाज एन इको फेमिनाइजेशन मूवमेंट, क्योंकि वो बेसिकली ये देख रहे थे कि उनका फ्यूल वुड लॉस होगा अगर ट्रीज़ को कट करेंगे, तो उन्होंने उनके साथ दे हग्ड दोस ट्रीज, राइट. अगर ड्रॉट आएगा तो उनको दूर से जाके वाटर लाना पड़ेगा, सो दिस इज़ एन एनवायरमेंटल इशू, ठीक है. देन दे नीड स्मोकलेस चूल्हा बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ द चूल्हाज, राइट. एंड देन रूरल एरियाज़ में क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑन द लॉस ऑफ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, ठीक है. सो इस वजह से बिकॉज एग्रीकल्चर में क्या है कि आपने देखा है कि सैलिनिटी बढ़ रही है, एग्रीकल्चर इतना प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं रहा, इतनी उसमें प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, सो उस सब की इश्यूज़ की वजह से डिस्प्लेसमेंट है. सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ रूरल एरियाज़ एंड दे माइग्रेट टू दी अर्बन एरियाज़ पुटिंग प्रेशर ऑन दोज एरियाज़, ठीक है. So these are the issues. Then we also have problems like child labor, tribal displacement, etc. सो अगेन अब हमारे पास जो कीवर्ड है दैट इज़ ही सोल, और आप इसको डिफरेंट डिफरेंट उसमें लगा सकते हैं, ठीक है. जैसे कि अगर हम बात करें ही सोल की तो आप इसको अगेन ओल्ड एज में, है ना, प्रॉब्लम्स ऑफ सिटीज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा में लगा सकते हैं. सो आई होप दिस लेक्चर इज़ हेल्पफुल टू यू. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.